Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you're all fine and doing your learning for your upcoming exams. So this is your lecture number 18, class 6, subject English. Today we will discuss a moral story. We have already discussed it in our previous lectures, but today I am going to repeat it and it will be a revision. So moral story, and after that I will give you some vocabulary words with proper meaning and you will make the sentences by using these vocabulary words. So the title or the moral of the story is Slow and Steady Wins the Race. Yes, it is Hare and the Tortoise about, and I think mostly students have learnt it by heart. Slow and steady wins the race. आहिस्ता मगर मुस्तकिल मिजाजी से किया जाने वाला काम इंसान को कामयाबी से हमकिनार करता है. इट मीन्स डैट अगर आप एक काम कर रहे हैं बिल्कुल उसको आराम से तहम्मुल के साथ मुस्तकिल मिजाजी यानी कॉन्टीन्यूसली उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं तो फिर आप क्या होगा, कामयाब हो जाएं. सेम केस विद योर स्टडीज़ एज वेल. अगर आप स्टडी करते जा रहे हैं प्रॉपर, एक दिन का काम नहीं होता कि आपने एक दिन में एग्ज़ाम्स की तैयारी की और आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए, ऐसा नहीं होता. थोड़ा थोड़ा आप करते हैं, पहले क्लासेस अटेंड करते हैं, फिर आपके टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपके मंथली टेस्ट होते हैं. हमारे तो स्कूल में एम टेस्ट भी लिए जाते हैं, ठीक है, या सडन टेस्ट भी होते हैं. वो आपकी प्रिपरेशन के लिए होता है और उसके बाद फिर जब आपकी तैयारी हो जाती है फिर आपके एग्ज़ाम्स होते हैं. और जो स्लो एंड स्टडी मतलब कॉन्टीन्यूसली उसको अच्छे तरीके से करता है तो वो कामयाब हो जाता है अच्छे नंबरों से. जो नहीं करता तो जो वन डे स्टडी करता है उसको फिर पता है उसका रिजल्ट कैसा आता है. सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. इट इज़ अबाउट द हेयर एंड द टॉर्टोइस. So student, I have made a story for you and you will make your own story, but recall to your mind that just you will use the simple past tense. Second form of verb is used for the story. Moral story. The hare and the tortoise. Once there lived, have a look on it. That will be done on your notebook and you should have to learn it by heart as well. Once there lived two friends, a hare and a tortoise, but have different natures. Hare was arrogant. Arrogant mean मगरूर किस्म का था, ठीक है. On the other hand, tortoise was humble. लेकिन वो बड़ा humble किस्म का था tortoise. Hare made fun of tortoise always. One day he challenged a race to tortoise. They started race when the hare covered half of the distance. Distance कहते हैं फासले को. He stopped and looked back. There was no one, so he decided to take a sleep. Time went on passing. The tortoise passed from the spot slowly and reached the winning spot. Hare woke up and saw that tortoise already won the race. The hare was ashamed. So moral is also pride hath a fall and slow and steady wins the race. अगर tortoise भी हेयर कितना करता कि चलो रास्ते में मैं भी वेट कर लेता हूँ तो क्या वो जीत सकता था? नो. लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली मुस्तकिल मिजाजी से अपनी रेस को कंटिन्यू रखता गया और फिर क्या हुआ कि वो जीत गया. प्राइड हैथ अ फॉल इज़ ऑल्सो अनदर मॉरल ऑफ द स्टोरी. Okay, so this is your story. You should have to learn it by heart. It is very important story and you will make your own story. It's not necessary to use these vocabulary words for to create a story. You will create your own story. Just you have to know about the hare and the tortoise and what are the characters and how and what kind of qualities they have and what will the beginning, middle and end. If you know it now, you can easily create your own story. Just recall to mind the second form of verb is used in moral stories. Student, after that we have sentences. खिलाफवर्जी करना, नुकसान पहुंचाना. वायोलेट. वायोलेट नुकसान पहुंचाना या खिलाफवर्जी करना, ठीक है. Like she loves to violate others. Yeah, she violated the rules of the society. उसको सोसाइटी के रूल्स खिलाफ करने का मज़ा आता है. ऑक्यूपेशन पेशा या मशगला, ठीक है. ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन द वर्ड इज ऑक्यूपेशन. व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, ठीक है. प्रमोशन
थर्ड वर्ड इज प्रमोशन, तरक्की करना। लाइक आपको प्रमोट किया गया था जब एनुअल एग्जाम्स हुए थे, उसके बाद आप प्रमोट हुए थे नेक्स्ट क्लासेस में, तरक्की की थी ना आपने, प्रमोशन। वायोलेट नुकसान पहुंचाना, खिलाफवर्जी करना। ऑक्यूपेशन पेशा, मशगला। प्रमोशन तरक्की करना। These are the three vocabulary words with meaning, and you will make your own sentences. After that, you have a diary. Learn plus write moral story. Moral story, slow and steady wins the race. I think you have already uh, written it on your notebook. If you done it on your notebook, just you will learn it. And make sentences of given words, and these are the given words: violate, occupation, and promotion, and you will make the sentences of these. Okay, Allah Hafiz.